In the previous videos, we have completed the different system, that is the anatomy of the frog. Now, in this video, we are going to discuss the first point, that is the special venous connection. Second point, that is sense organs of the frogs, and then fertilization and metamorphosis of the frogs. So first one is special venous connection. जैसे कि हमने एक वीडियो में लर्न किया है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग which consists of heart, blood, and blood vessels. And through that system, there is a exchange of nutrients, or to provide the nutrients, exchange of respiratory gases, and to provide the water. ये सब होता है. इसके अलावा फ्रॉग में सम स्पेशल वेनस कनेक्शंस हैं. एंड कौन से देयर आर टू स्पेशल वेनस कनेक्शन जो दो ऑर्गन्स में कनेक्ट है. फर्स्ट वन इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. कौन सा है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. दैट इज फर्स्ट hepatic portal system. Second one is renal portal system. Hepatic and renal portal system. So these are the two special venous connections. Hepatic, जैसे कि hepatic word किससे रिलेट करता है? Hepatic word रिलेट करता है liver से. Right? So what is hepatic portal system? That hepatic portal system exists between liver and intestine. लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेशल वेनस कनेक्शन है जिसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. सेकेंड वन इज रेनल पोर्टल सिस्टम. जैसा कि हमें पता है कि द वर्ड रेनल किसके लिए यूज करते हैं हम? वी यूज दैट वर्ड फॉर किडनी. राइट. तो रेनल पोर्टल सिस्टम कौन से ऑर्गन में है? सो इट्स अ स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड lower body parts and lower body parts, upper body parts and lower body parts. So it's a special connection between the kidney and lower body parts, and उसे कहते हैं renal portal system. So these are the two special venous connection: hepatic portal system between liver and intestine, and second one is the renal portal system between kidney and lower body parts. इसके बाद सेकेंड पॉइंट कौन सा है? सेंस ऑर्गन्स. तो यहां पे वन वन वर्ड आई विल यूज वन सेंटेंस की फ्रॉग हैज डिफरेंट सेंस ऑर्गन. फ्रॉग हैज डिफरेंट सेंस ऑर्गन. जैसे कि हमारे इसमें भी डिफरेंट सेंस ऑर्गन है जो हमें सेंस करते हैं. Sense of vision, sense of hearing, sense of touch, sense of smell, all that. तो उसी तरह frog also has a different sense organ. कौन से? Number one, organ of touch, organ of taste, organ of smell, organ of vision, organ of hearing. So first कौन सा है? Organ of touch. तो कौन सा organ of touch sense करता है? So that is सेंसरी पैपिली. कौन सा है? सेंसरी पैपिली. राइट. थर्ड ऑर्गन ऑफ टेस्ट. कौन सा ऑर्गन ऑफ टेस्ट है फ्रॉग में? दैट इज टेस्ट बर्ड्स. दिस इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट. देन ऑर्गन ऑफ स्मेल. ऑर्गन ऑफ स्मेल इन फ्रॉग इज नेजल इपिथेलियम. कौन सा है? नेजल इपिथेलियम. देन ऑर्गन ऑफ विजन. कौन सा है? ऑर्गन ऑफ विजन इज आईज. राइट. कैसे है आईज? तो आईज है सर्कुलर, और यू कॉल्ड इट एज स्पेरिकल. कैसे है? स्पेरिकल. एंड कहाँ है? दे आर लोकेटेड इन ऑर्बिट. ऑर्बिट के अंदर है, ऑर्बिट ऑफ अ स्केल. एंड कौन से आईज है? तो आईज आर सिंपल. राइट. आईज आर सिंपल. एंड सिंपल आईज मतलब
इसको मिटाता हूं so that we can write more clearly, right? कैसा आइस कैसे है? स्पेरिकल है, लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ अ स्कल। एंड कैसे है? सिंपल। तो सिंपल आइस मतलब कंपाउंड के अपोजिट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉकरोच में कोई कैसा है? कॉकरोच इज कंपाउंड आइस, एंड कंपाउंड आइस शो द मोजाइक रीजन। यहाँ पे कैसा है? आइज आर सिंपल मतलब दे possess ओनली वन यूनिट, एक ही यूनिट होता है। therefore it is spherical, ऑर्बिट में है एंड सिंपल है, possess only one unit. Then last, organ of hearing. Organ of hearing is tympanum, जो आईज के बाजू में होते हैं। मतलब हम लोगों को पता है कि हमने लर्न किया है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट्स टिम्पैनम। फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ओनली टिम्पैनम जो एक्सटर्नली दिखता है। एंड टिम्पैनम कैसा है? तो टिम्पैनम इज ड्रम लाइक स्ट्रक्चर। एंड कैसा है? तो विच कैन सी एक्सटर्नली, राइट? कैसा है? जो फ्रॉग में इंटरनल ईयर्स होने के बाद एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। एक्सटर्नल ईयर इन द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम, एंड विच इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। सो दीज आर कितने ऑर्गन्स हुए टोटल? 5। उसमें से दीज 3 कौन से? सेंसरी पैपिली, टेस्ट बर्ड्स एंड नेजल एपिथेलियम, दीज आर नॉट वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप नहीं है। तो कैसे है? दीज आर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, और दीज आर सेल एग्रीगेशन। कैसे है? दीज आर सेल एग्रीगेशंस नियर नर्व एंडिंग। कहां पे होते हैं? नियर नर्व एंडिंग्स, नॉट वेल डेवलप्ड, ओनली द सेल्स का ग्रुप एग्रीगेशंस। वेयर एज दिस टू कौन से? ऑर्गन ऑफ विजन एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग, दीज आर मतलब आईज। एंड सेकेंड टिम्पैनम, ये कैसे है? दीज टू सेंस ऑर्गन्स आर कैसे है? वेल डेवलप्ड। कैसे है? दीज आर वेल डेवलप्ड, राइट? इसके बाद का लास्ट पॉइंट इसमें जो है, जो टिम्पैनम है, जिसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल ईयर, दैट इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। इसके अलावा दिस इज द ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग। ये क्या है? ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग और ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? तो टिम्पैनम को क्या कहते हैं? टिम्पैनम इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज इट्स ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग, organ of equilibrium. So this is all about sense organ. Organ of touch, sensory papillae. Organ of taste buds. Organ of smell, nasal epithelium. Organ of vision, eyes. Organ of hearing, tympanum. Tympanum is also the organ of balancing and equilibrium in frog. अब ये खत्म होने के बाद बचता है लास्ट पॉइंट। कौन सा है लास्ट पॉइंट? The last point is fertilization and metamorphosis in frog. Frog में fertilization कैसे होता है? And second one is metamorphosis. So that we'll discuss this. कौन सा? fertilization. जैसे कि हमें पता है कि fertilization क्या है? फर्स्ट, fertilization simply means the fusion of male gamete with female gamete, right? इन लोगों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद इमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? द इमीडिएट प्रोडक्ट इज जाइगोट। जाइगोट इज इमीडिएट प्रोडक्ट। अब देखो कि फ्रॉग में ब्रीडिंग सीजन होता है। कौन सा ब्रीडिंग सीजन होता है? रेनी सीजन इज ब्रीडिंग सीजन फॉर फ्रॉग. So during that breeding season, male frog climb over the female frog and hold her
थ्रू द कॉपुलेटरी पैड। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मेल फ्रॉग बियर्स द कॉपुलेटरी पैड। कहाँ होते हैं? इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलेग, and then simultaneously releases male gamete, that is sperm and eggs रिलीज होते हैं। बट कैसे होने चाहिए? दिस शुड बी रिलीज साइमल्टेनियसली, एक साथ रिलीज होने चाहिए। देन एंड ओनली देन फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग कैसा है? एक्सटर्नल है, राइट। एक्सटर्नल मतलब कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मतलब कहाँ होता है? इन फ्रॉग इट टेक्स प्लेस इन वाटर। अब ये जाइगोट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है? जाइगोट। अब जाइगोट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है? तो डेवलपमेंट होता है। तो इन लोगों में डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। तो फ्रॉग में क्या होता है? तो फ्रॉग में डेवलपमेंट कैसा होता है? दैट इज मेटामॉर्फोसिस। अब उसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं मिटाता हूं। अब देखो, ये सब होने के बाद मतलब ब्रीडिंग सीजन, रेनी सीजन, साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ एग्स एंड स्पर्म। हमें ये भी पता है कि फीमेल फ्रॉग एट अ टाइम 2500 to 3000 ओहम रिलीजेस, राइट। देन इमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करता है? प्रोड्यूस द लार्वल स्टेज। एंड वो लार्वल स्टेज कौन सा है? टैडपोल। टैडपोल क्या करता है? टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस एंड प्रोड्यूस एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग प्रोड्यूस होता है। मतलब फर्स्ट जाइगोट, देन tadpole undergoes metamorphosis, produce adult frog. Right? And adult frog is amphibian. Amphibian. Amphibian मतलब can live in water and can live on land. Right? जैसे कि हमें पता है कि फ्रॉग को एम्फीबियन कहते हैं कि क्यों? कि वो वाटर में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। बट इसका जो स्पेशल रीजन है वो है कि फ्रॉग फॉर फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग शुड एंटर इन द वाटर, नहीं तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, राइट। दैट इज द रीजन। अब देखो टैडपोल कैसा है? तो टैडपोल एक ओहाइड स्ट्रक्चर है एंड विच हैव अ लॉन्ग टेल, राइट। एंड यहां पर होते हैं लिम्स। And also there is a presence of such structure through which gills are present. Right? This is gills which use for respiration, and this is long tail. Right? So this is tadpole. And then tadpole undergoes metamorphosis, अपने बॉडी को फॉर्म को चेंज करता है and convert it into the adult frog, right? So this is, अब क्लियर कट डिफरेंस डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट आर द टैडपोल। टैडपोल में क्या डिफरेंसेस हैं एंड एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग उसमें फर्स्ट पॉइंट, टैडपोल जो है इट इज स्ट्रिक्टली aquatic. ऐसा है, it is strictly aquatic, whereas adult frog is amphibian. Is amphibian, and amphibian मतलब live in water as well as on land, but tadpole only water, aquatic. Second, tadpole में respiration takes place through gills, right? Respiration takes place through gills. Adult frog में there are three respiratory structure: buccal cavity,
skin, and lungs. These are respiratory structures in adult frog. Then tadpole में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीशन कौन से फॉर्म में होता है? अमोनिया. सो इट इज अमोनोटेलिक. क्या है? इट इज अमोनोटेलिक. फ्रॉग में जैसे हमने देखा है कि एक्सक्रीशन कौन से फ्रॉग में कौन से फॉर्म में होता है? यूरिया. सो इट इज यूरियोटेलिक. ये क्या है? दिस इज लॉन्ग टेल. टैडपोल हैव द टेल, बट एडल्ट फ्रॉग में टेल क्या होती है? रिड्यूस्ड होते 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 जाती है. सो इट इज विदाउट टेल और रिड्यूस्ड टेल. You called it as a without tail or reduced tail, and finally निकल जाती है. So these are the clear cut comparative points. क्योंकि हमें हर एक पॉइंट कंपैरिजन करके ही पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम नेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, otherwise नहीं. So tadpole strictly aquatic, gills as a respiratory structure, ammonia, excrete, therefore ammoniotelic, and tail is present. Tail is present. Here, amphibian can live in water as well as on land. Buccal cavity, skin, and lungs are respiratory structures. It excretes urea, so it is ureotelic. And जैसे कि tadpole से tail reduce होते होते जाती है and finally completely reduce. So these are the comparative points between tadpole and adult frog. So in this video क्या कंप्लीट किया? स्पेशल वेनस कनेक्शन, hepatic portal system, renal portal system. Sense organs, organ of touch, organ of smell, organ of vision, organ of hearing. Tympanum is the organ of hearing as well as organ of balancing. And finally, the fertilization and metamorphosis. So with this, we have completed the chapter structural organization in animals. In the next video, we'll start the new chapter, that is biomolecules.